Welcome dear students. So this is the fifth lecture of fuels. In the previous lectures 1 to 5 we have discussed various topics related to the fuels. And in the previous lecture we have discussed the coal and its analysis. So today we would be basically emphasizing upon the numerical problems which are related to coal, its analysis, and also we would be covering some important questions related to the combustion of fuel. So what is the quantity of air required, what is the quantity of oxygen required, everything would be covered in this lecture. So this is going to be a very important lecture for all of you, so pay attention to this lecture. So today we would be covering the concepts and numerical problems based on proximate analysis of coal and then ultimate analysis of coal. Besides, we would be discussing some important problems related to the determination of air required for combustion of coal, and that is by weight and volume. So let us consider a problem here. You can see that this is the problem related to the analysis of coal. So let us try to understand that what is asked in this particular question. So exactly 1.5 gram of coal was weighed into a silica crucible. After heating for an hour at 100 degrees centigrade, the residue weighed 1.4145 gram. The crucible was then covered with a vented lid and strongly heated for exactly 7 minutes at 950 plus minus 20 degrees centigrade. So if you remember that if we consider the coal and it is heated at around 100 degrees centigrade, then we are trying to determine the moisture content here. So if you remember, we had discussed the analysis of coal, and that too it is the proximate analysis of coal. And in the proximate analysis, first of all we determine the moisture content, and then it is followed by volatile matter. So in this question, when we consider the temperature 100 degrees centigrade, so the residue was 1.415 grams, so it was just after the removal of moisture content. And then you can see here the crucible was then covered with a vented lid. So vented lid means the lid which contains holes, and it is strongly heated to exactly 7 minutes at 950 plus minus 20 degrees centigrade. It means we are removing the volatile matter here, and the residue weight 0.5 to 8 grams. देन क्रूसिबल वॉज हीटेड विदाउट द कवर. जब हम कवर हटा देते हैं और उसके बाद उसके कांस्टेंट वेट आने तक उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और वेइंग जब कांस्टेंट होने लगती है, वेट कांस्टेंट आने लगता है, तो उस वेट को हमने देखा दैट इज़ 0.254 ग्राम. So you have to calculate what are the two questions over here. You can see that you have to calculate the percentage results of this analysis and what type of analysis is this and why is this analysis so named. So let us take it one by one. So percentage of moisture, first of all we have to determine. So earlier the weight of the coal sample was 1.5 grams, and after heating, here you can see at 100 degrees centigrade, so the temperature, if you remember, it was 105 to 110 degrees centigrade, and when it was heated, then the moisture content will get removed, and then the loss in weight, you can see that it is 1.415 gram. So loss in weight may be determined by subtracting 1.415 from 1.5. So this is the loss in weight when it is heated up to 100 degrees centigrade temperature. So the loss in weight, right, upon weight of the coal sample taken into 100, this is the formula, and we get percentage of moisture. So percentage of moisture is equal to loss in weight upon weight of the coal sample taken into 100. It gives out the percentage of moisture. Similarly, after that, just after the removal of moisture content, it is strongly heated for exactly 7 minutes at 950 plus minus 20 degrees centigrade, and the weight was found to be 0.528 grams. So here you can see that when we determine the percentage of volatile matter, then we have to take the first weight, which is the second weight, like this one we have to take, right, 1.415 minus 0.5285 upon 1.5, that is weight of the coal sample taken into 100, and it gives 59% as the percentage of volatile matter. And after that, the crucible was then heated without the cover. If we heat it without the cover until a constant weight was obtained, the mass was found to be 0.254 grams. So percentage of ash will be the weight of ash formed, residue formed. So 0.254 upon weight of the coal sample taken 1.5 into 100, and it gives 16.93%. So we have got percentage of moisture, percentage of volatile matter, and percentage of ash. So
Now we have to determine the percentage of fixed carbon, which can be calculated by adding all these values and subtracting it from 100. So 100 minus 5.67 plus 59 plus 16.93, and it gives 18.4%. So this is the fixed carbon percentage. So it is a stepwise process. First of all, we determine moisture, then volatile matter, then ash, and then fixed carbon percentage. And the second part of the question is that what type of analysis is this and why is this analysis so named? So here you can see that this type of analysis is proximate analysis, and it is so named because the data varies with the procedure adopted. जैसे जैसे हम अलग अलग स्टेप यानी प्रोसीजर अडॉप्ट करें वैसे वैसे डेटा वेरी कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज proximate analysis. So this is the problem which is related to proximate analysis of coal. Now let us come to the next question. Now here you can see that it is related to the determination of percentage of nitrogen, right? So the question says 3.2 gram of coal, just a second. Okay, so 3.2 gram of coal was gelatinized and ammonia gas thus evolved was absorbed in 45 ml of 0.1 NH2SO4. जेल्डॉल्स apparatus में आपने नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशन का के लिए जेल्डॉल्स apparatus का यूज़ किया था, और जब उसको उसमें 3.2 ग्राम या किसी भी यूनिट क्वांटिटी या यूनिट मास के फ्यूल को आप गर्म करते हैं तो उससे अमोनिया गैस लिबरेट हो रही थी, और इस अमोनिया गैस को आपने किस में एब्जॉर्ब कराया था? सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब किया, किसी भी एसिड सोल्यूशन में एब्जॉर्ब किया था, राइट? सो हियर द वॉल्यूम ऑफ द एसिड हैज़ बीन यूज्ड गिवन and normality of the solution or acid has been given. Now after absorption the excess residual acid required 11.5 ml of 0.1 N NaOH. What does this mean? यानी अभी भी जो excess acid है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 11.5 ml of 0.1 N NaOH यूज़ किया गया. इसके मतलब कि कुछ ही एसिड एब्जॉर्ब हुई थी. 45 ml यूज़ किया और 11.5 जो है उस जो रेसिडुअल एसिड है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया गया. इसके मतलब कि जो एसिड एब्जॉर्ब हो रही है यानी एसिड जो यूज़ हो रही है, एसिड यूज्ड विल बी 45, उसमें से आप माइनस कर देंगे 11.5, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, राइट? सो वॉल्यूम आपको लेना है, नॉर्मेलिटी आपको पता है, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला. So percentage of nitrogen is equal to 1.4 into N into V upon W, where N is the normality of the acid, V is the volume of the acid used. So percentage of nitrogen will be 1.4 into N is 0.1, and then volume of the acid used, as I have already discussed with you, that it should be 45 minus 11.5, and upon weight of the coal sample taken, which was 3.25. So in this way we determine the percentage of nitrogen. So dear students, you can see here that whenever this type of problem is asked, then you have to use this formula, right? So this formula has to be used by you, and then accordingly you can calculate the value of N nitrogen percentage. Now this is another problem, and obviously it is related to the ultimate analysis of coal. So when you determine the percentage of carbon, hydrogen and nitrogen or even sulfur, then it is related to percentage analysis of constituent elements, and it is actually the ultimate analysis of coal. So in this section you can see that 0.1 gram of a sample of coal was used in a bomb calorimeter for the determination of calorific value. The ash formed in the bomb calorimeter was extracted with acid, and the acid extract was heated with barium chloride solution. So what is happening here, that whenever sulfur is present in the coal sample, then sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide, and then sulfur dioxide reacts with H2O to form sulfuric acid, right? Sulfuric acid is formed, or sulfates are formed. So in order to determine that how much sulfate is formed here, we use the barium chloride solution, and in that way barium chloride gets precipitated in the form of barium sulfate. So यहाँ पर हमारे लिए important क्या है कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कितना बन रहा है. So precipitate बेरियम सल्फेट का बनेगा. The precipitate was filtered, dried and weighed, right? Here the precipitate was filtered, dried and weighed, and the weight of the precipitate was found to be 11.5 gram. Just a second.
राइट. सो द प्रेसिपिटेट का जो वेट आ रहा है वो 0.01 ग्राम है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? यू कैन सी हियर, दिस इज़ द फॉर्मूला. Percentage of sulfur is equal to 32 upon 233 into W dash upon W into 100, right? So what is this W dash? W dash is the weight of barium sulfate formed and W is the weight of coal sample taken. And by putting in all these values, you get the percentage of sulfur. So in a last example, you have determined the percentage of nitrogen, and in this example, you have determined the percentage of sulfur. Another important topic is combustion of fuel. So whenever we are asked some problems, numerical problems related to the combustion of fuel, we have to determine the oxygen quantity required for the complete combustion and also the air quantity required. So here we will understand some concepts of combustion of fuel. The first point, you can see that the chemical reaction or process accompanied by the liberation of heat and light is known as combustion of fuel. So in whenever we use the term combustion, that it involves the liberation of heat and light, so it is necessarily an exothermic reaction. So here you can see that carbon combines with oxygen to give carbon dioxide, and the heat liberated is minus 97 kilocalorie. So liberation of heat is very much needed here. Then you can see that to ensure complete combustion, the substance must be brought to its ignition temperature. Now what is this ignition temperature? We have already studied earlier. Ignition temperature is the minimum temperature required when the substance or the fuel starts burning smoothly without further addition of heat from outside. So in this way, this is an important concept related to combustion. Now again, there are certain principles which are to be remembered while solving the problems. What are these principles? Let us understand. So first principle is that substances always combine in definite proportions. So definite proportions, we can consider the example here. Carbon plus O2 gives CO2. So here by weight we consider 12 gram of carbon combines with 32 grams of oxygen to give 44 grams of carbon dioxide. Similarly, we can see that we can consider the stoichiometry here. So one volume of carbon combines with one volume of oxygen to give one volume of carbon dioxide, right? Another thing is that if nitrogen or ash is present, then you can see that nitrogen or ash present in the fuel are non-combustible matter. So since these are non-combustible matter, hence do not consume any oxygen. Then in actual practice, the combustion is carried out in the presence of air. Therefore, from the amount of oxygen required, amount of air is also calculated. So the basic principle is that air contains 21% of oxygen by volume and 23% of oxygen by weight. So you have to remember this and this. So 21% of oxygen by volume and 23% of oxygen by weight. So here we can see that 1 meter cube of oxygen is supplied by 1 into 100 upon 21, that is 4.76 meter cube of air. Similarly, 1 kg of oxygen is supplied by 1 into 100 upon 23, that is 4.35 kg of air. So this we have to remember. Mean molecular weight of air is 28.94 grams per mole. The composition of a solid, liquid or gas, solid or liquid fuel is usually expressed by weight. अगर हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की बात करेंगे तो ये वेट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, जबकि गैशियस फ्यूल अगर लेंगे सो इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड और कैलकुलेटेड बाय वॉल्यूम. Masses of gaseous substances can be calculated in accordance with gas laws and Avogadro's law. So these are certain principles which are related to combustion of fuel and then further solving some numerical problems. This is the first question you can see related to the combustion of fuel. Calculate the weight and volume of air required for the combustion of 3 kg of carbon. So let us write down the equation first. C plus O2 gives CO2, right? And we know the basic principle that air contains 23% of oxygen by weight and 21% of oxygen by volume. Keeping this in mind, first of all we'll determine the oxygen required. So here you can see that 12 kg of carbon के combustion के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो है 32 kg. तो यहाँ पर पूछा कितना है 3 kg. तो 3 kg ऑफ कार्बन के कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 32 upon 12 into 3, that is 8 kg.
सो 8 kg मतलब 8000 ग्राम्स। तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ एयर एट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 100/23 इंटू 8, क्योंकि हमें पता है कि एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। सो अगेन हमेशा ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 100/23 इंटू जो भी वेट आया उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड हमने ये निकाल लिया विच इज़ 34.78 kg ऑफ एयर। नाउ 32 grams of oxygen occupies 22.4 लीटर एट NTP। ये हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये वाला जो वेट है 32 ग्राम्स, ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। सो 8 into 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई 22.4/32 into 8000, दैट इज 5600 लीटर एट NTP। सो अगर हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 100/21 इंटू 5600, दैट इज़ यहाँ पर जो कैलकुलेट करने में वैल्यू आ रही है वो आ रही 26.67 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट जो उन्होंने कवर किए वो ये कि हमें ये याद रखना है कितने % ऑक्सीजन एयर में होता है बाय वेट एंड कितने % ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम। सो जब भी हमको वेट और वॉल्यूम एयर ऑक्सीजन का पता होगा तो हम एयर का इजीली निकाल पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का निकाला, फिर वेट ऑफ एयर निकाला 100/23 इंटू 8 कर दिया। इसी तरह वॉल्यूम हमने ऑक्सीजन का निकाला 5600 आया है तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाला 100/21 इंटू 5600, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। Then let us consider this example, this question here. Calculate the volume of air required for complete combustion of 1 meter cube of gaseous fuel having the composition, यहाँ पर कुछ gases का composition दिया हुआ, CO is equals to 46%, CH4 10% and so on. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो combustion कर रहे हैं gaseous fuel उसकी quantity है 1 meter cube. So 1 meter cube gaseous fuel में कितने अमाउंट क्या होगा वो हम निकालेंगे। सो 1 मीटर क्यूब ऑफ गैसियस फ्यूल कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 46/100 इंटू 1, मीथेन 10/100 इंटू 1 एंड सो ऑन। सो 1 मीटर क्यूब में कितने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ये सब गैसेस दी हुई कितने मीटर क्यूब प्रेजेंट है ये हमने निकाल लिया। अभी हम रिएक्शंस लिखेंगे। सो रिएक्शन सबकी हमने यहाँ बैलेंस्ड करके लिखी। जब रिएक्शन लिखने के बाद वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सो या यू कैन सी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है 1/2 है। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंटू 0.46 आपने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला था, जिससे मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड आ गया 0.23। मीथेन की अगर हम कंबशन रिएक्शन लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से कंबशन हो रहा है तो कितने मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है 2, तो 2 इंटू 0.1 यहाँ पर आपने निकाला था 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 0.2 आ गया। सिमिलरली H2 का कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो 1/2 इसका रिक्वायर्ड, सो 1/2 इंटू 4 कर दिया तो 0.2 आ गया। इसी तरह जब मीथेन के साथ एथिलीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, तो 3 इंटू 0.02 आपने यहाँ पर जो डिटरमाइन किया था उससे किया तो 0.06, तो टोटल आप देखेंगे 0.69 यहाँ पर आ रहा है। तो फाइनली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड इज इक्वल्स टू 100/21, क्योंकि आपको पता है एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन, सो 100/21 इंटू 0.69, सो इट कम्स आउट टू बी 3.285 मीटर क्यूब, राइट। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड दैट हाउ वी कैन डिराइव एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 मीटर क्यूब फ्यूल दिया था, 1 मीटर क्यूब फ्यूल में कितने इसकी क्वांटिटी होगी ये हमने निकाल लिया। ये बैलेंस रिएक्शंस लिखी और इसमें देखा कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड को यहाँ पर लिखकर मैंने हर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, जिससे उसका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड आ गया, हर गैस का टोटल ले लिया और टोटल को 100/21 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इन दिस वे वी गेट द वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड। देन देर आर 2 important things related to theoretical amount of oxygen required for complete combustion of 1 kg of fuel। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। इस केस में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन क्वांटिटी अगर निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 32/12 C 16/2 H - O/8 प्लस S। तो इस तरह आ जाएगा 32/12 C प्लस 8H प्लस S माइनस O। सो दिस इज द फॉर्मूला, जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, S और O ये जो शो कर रहे हैं, दीज आर द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर।
जब हम ऑक्सीजन क्वांटिटी निकाल लेंगे तो हम एयर क्वांटिटी निकालेंगे. एयर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 100/23 इंटू ऑक्सीजन क्वांटिटी जो इससे हमने निकाली है. इसी तरह अगर परसेंटेज एक्सेस दिया हुआ है तो एयर विद एक्सेस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100/23, 100 प्लस परसेंटेज एक्सेस अपॉन 23 कर देंगे और इंटू ऑक्सीजन क्वांटिटी. राइट. सो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं. इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर ली हुई है. अब इस क्वेश्चन को देखिए. अ कोल सैम्पल रिक्वायर्स 20% एक्सेस एयर. तो जो हमने फॉर्मूला सेकेंड वाला यूज़ किया था एक्सेस एयर वाला, उसको यूज़ करेंगे. सो अ कोल सैम्पल गिव्स रिक्वायर्स 20% एक्सेस एयर फॉर कंप्लीट कंबशन. कैलकुलेट वेट ऑफ एयर फॉर 100 kg कोल इफ द कोल कंटेन्स इतना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स. सो 100 kg कोल में हम पहले निकालेंगे कितना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है. तो वेट ऑफ कार्बन इन 100 kg ऑफ कोल इज इक्वल्स टू 81/100 इंटू 100. इसी तरह हाइड्रोजन का निकालेंगे क्वांटिटी, वेट 4, इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज 4 दिया तो 4/100 इंटू 100, ये इससे हमने ले लिया. नाइट्रोजन नॉन कंबस्टेबल, इसको छोड़ देंगे. राइट. वेट ऑफ सल्फर इन 100 kg ऑफ कोल एंड देन वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 100 kg ऑफ कोल. सो 100 kg में हमने पहले ये निकाल दिया. फिर उसके बाद ऑक्सीजन क्वांटिटी इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे. सो ऑक्सीजन क्वांटिटी हमने निकाला 32/12 प्लस 8H प्लस S माइनस O. तो ये सारी वैल्यूज़ को जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी उनसे हमने यहाँ पर इनपुट करके ये वैल्यू निकाली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्वांटिटी आ गई तो एयर विद परसेंटेज एक्सेस इज इक्वल्स टू 100 प्लस परसेंटेज एक्सेस अपॉन 23 इंटू ऑक्सीजन क्वांटिटी, एंड इन दिस वे वी हैव found the value of air. Right. So in this way we can calculate the weight of air required for 100 kg of coal. Right. So this is how we have understood some important numerical problems. Thank you very much. Keep learning. Understand all the lectures, all the concepts which we have shared in during lectures 1 to 4, and then accordingly in lecture number 5 you have discussed some problems, and then let us come for the doubt clearing session. Thank you.